Hello students, today we will start question answer of chapter number 2, that is hardware and software. As I have told you earlier that you have to write the name of the chapter on the blank page of your copy and you have to write it once because there is no need to write the chapter name again and again. Okay, now we have done 3 questions. In our previous video, I have told you these 3 questions. After this, from next page, you have to write more other questions also. But first of all, you have to mention the date on the right side of your copy. Then again, I am telling you that heading and questions must be with black pen and your answer, you will write your answer with blue pen. Okay. Now, the heading you have to write with black pen, that is answer the following questions. Then leave a line. Then write question number 1. Describe hardware with example. Here you have to mention what is hardware and you have to give example also. As I have told you that all the physical part which you can see or touch is known as hardware. ऐसे पार्ट्स कंप्यूटर के जिन्हें आप देख सकते हो और छू सकते हो उसे हार्डवेयर कहते हैं. सो वी विल स्टार्ट आंसर लाइक दिस. ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर विच वी कैन सी और टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. Now for example, we have to give example also. So for example, mouse, keyboard, monitor, motherboard, etc. Then leave a line and start new question. What do you mean by software? Software क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है. The volatile part of a computer which no one can see or touch is known as software. These are computer coded form of instructions or programs. कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बिकॉज दे आर गिवन इन अ कोडेड फॉर्म. बिकॉज वट एवर इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो उसे अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लेते हैं, अपने मशीन कोडेड लैंग्वेज में चेंज कर लेते हैं कंप्यूटर. बिकॉज एज यू नो दैट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस. इट अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज. सो इट कन्वर्ट इट इनटू मशीन लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज वी कैन नॉट सी और टच. उन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं और छू भी नहीं सकते हैं, इसलिए उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. गिव some examples of operating system. As you know that operating system is the most important part of a computer because operating system makes the computer ready to work and it also makes the computer understand whatever instruction we are giving to the computer. It makes the computer understand those इंस्ट्रक्शंस. ये कंप्यूटर को हमारे लिए काम करने के लिए तैयार करता है और हमें और कंप्यूटर को ये बताता है कि हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो क्या इंस्ट्रक्शन है. सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स, यूनिक्स. विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. टुडे वी आर यूजिंग दिस विंडोज वेरी मच. विंडोज सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि इसे आजकल सभी यूज कर रहे हैं. इट इज यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज वेरी इजी टू ऑपरेट फॉर एवरीवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? As I have explained you earlier that application software is developed by the computer user to fulfill their own need. कंप्यूटर यूजर के अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट every organization or every
institution has their own application software which fulfill their own need. Just for example, if in railways you will see software which fulfill the need of their own need, because it deals with the trains, their reservation and their arrival and departure of the train. In the same way, in our school also, they have their own application software which deals with the record of the student or the record of the school. So application software is that software which is generally developed by the computer user to fulfill their own need. जो आपकी ज़रूरत को पूरा करता हो उसके अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. फॉर एग्जांपल MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS ऑफिस पैकेज के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज बिल्ट फॉर कॉमन पर्पस, विच इज बिल्ट टू सर्व कॉमन पर्पस. जो लोगों के कॉमन पर्पस को पूरा करता है उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं. जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज दैट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज बिल्ट टू बी utilized by anyone to serve their common purpose. For example, backup antivirus software. Backup software is that software which makes the when you make a data, it makes a duplicate data of it and it keep it as a backup when your original data is, if it is lost, then you can regain it from backup software. In the same way, antivirus is that software which tell or which save your computer from virus. So these are commonly used for their common purpose. So these are known as utility software. Now last question is, what is a language processor? Give two examples of language processor. There is two question. One is what is language processor and second is you have to give example of language processor. Language processor are those software which are used to write application program. जो application program को लिखने के लिए यूज किया जाता है उसे लैंग्वेज प्रोसेसर कहते हैं. लैंग्वेज प्रोसेसर वर्क्स एज अ ट्रांसलेटर. लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर की तरह काम करता है क्योंकि as I have told you that when any program is developed, it is in high level language and our computer understand only machine level language. So this language processor convert it into machine level language. So it works as a translator. ये translator की तरह भी काम करता है. So you have to write answer like this. Language processor are those software which are used to write the application program. Now we have to give two examples. Two examples of language processor are Logo and Basic. So we have completed question answer and we will do exercise next day or tomorrow. So after completing this, you have to start new exercise from new page. So do this work in a neat and tidy way. Okay. Thank you.